questions regarding alcohol and its use and its misuse. So आज कुछ सवाल जवाब करेंगे about alcohol and its effects on the body. Uh, Before we start the session today, I would request Yogesh ji to please come forward and conduct the morning prayer. Over to you, Yogesh ji. Thank you, Dr. Meenakshi. डॉक्टर के अग्रवाल सर की दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए आज फिर से हम एक यजुर्वेद के अध्याय 23वें का मंत्र 13 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। य प्राण तो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपश्च दुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए अपनी समस्त उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। इसका पोएटिक अर्थ भी बोलता हूं मैं। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंट लेकर तुम्हारे चरणों में आते हैं। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर मीनाक्षी मैम। Thank you, Yogesh ji, for doing these mantras every Tuesday. So we're going to start the session. I need 2 minutes if I can. Yes, go on. सबको नमस्ते। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। इस विषय पर मैं केवल थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 14 सितंबर 1949 को, उसकी जो एक सभा थी उसने एक प्रपोजल दिया था कि जिस तरह से सारे राष्ट्र की एक ही भाषा होती है, हर राष्ट्र की एक ही भाषा होती है, एक ही ध्वज होता है, एक ही संविधान होता है, तो भारतवर्ष की जो भाषा है वो हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो उस सुझाव को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसने मान लिया था और इसे अपने संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। लेकिन उसमें एक गलती हो गई कि 1950 में जब संविधान को लागू होना था तो उस समय ये कह दिया गया कि इस विषय को, राष्ट्रभाषा को हम 15 वर्ष बाद लागू करेंगे, यानी कि 1965 से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानेंगे। तो वो 15 वर्ष उन्होंने इसलिए रखे थे कि हम लोग जो है उन दिनों तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उस समय सब कुछ अंग्रेजी में उपलब्ध था और हिंदी में कुछ नहीं था। तो ये मानना था कि इन 15 वर्षों में हम पूरे देश में हर क्षेत्र में हिंदी का विकास करेंगे और हर प्रकार के उसे सक्षम बना लेंगे। काफी स्वयंसेवकों ने मेहनत की और हर चीज को हिंदी में उपलब्ध कराया, बनाया, लेकिन राजनीतिक कारणों से 14 सितंबर केवल एक फॉर्मेलिटी रह गया और हिंदी को हमने पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। कभी किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश ये सरकता ही गया और आज भी एक ये दुखद स्थिति है कि हम हर वर्ष हिंदी मनाते हैं। सारे देश में हिंदी का बजट होता है, सारी मीटिंगें होती हैं और ऐसे कंपटीशन स्कूलों में और ये कंपटीशन और वो कंपटीशन और ऑफिस के जो बजट होते हैं उसमें काजू खाए जाते हैं। बस यही है हमारा जो हिंदी प्रेम। उसके अलावा हिंदी ना आगे बढ़ी ना उसे आगे बढ़ने दिया गया। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी हमारे राष्ट्र की एक ऐसी भाषा है जो, क्योंकि एक हमारा ही देश ऐसा है जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, हर क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर के बाद, 7 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है या भाषा का रूप बदल जाता है।
तो उन सभी भाषाओं को इकट्ठे रखने के लिए, सूत्र में पिरोए रखने के लिए हिंदी एक सूत्र का काम करती है। हिंदी किसी और भाषा के ऊपर अपनी कोई श्रेष्ठता या वो उस थोपने का काम नहीं करती। हिंदी एक ऐसी भाषा थी, इसलिए इसे स्वीकार किया गया था कि सारे भारतवर्ष में अगर एक ही भाषा रहेगी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, बात करते हैं, तो हमारी एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें और हमारा सरकारी काम काज चल सके। लेकिन राजनीति रही, दूसरे कारण रहे, जिन कारणों पर मैं ये फोरम नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारा हिंदी दिवस है। जिस प्रकार से हमारा भारत का संविधान है, जिस प्रकार से हमारा भारत का ध्वज है, जिस प्रकार से हमारा भारत का राष्ट्र पक्षी है, उसी प्रकार से हमारी एक राष्ट्रभाषा हिंदी भी है। और हिंदी को केवल हम एक फॉर्मेलिटी के लिए ना बना करके हिंदी में बात करना, हिंदी में लिखना, हिंदी में अपने हस्ताक्षर करना, जहां तक संभव हो सके हिंदी में काम करें, क्योंकि हमारे पूरे देश को अगर एक सूत्र में, एक माला में पिरो कर रखने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो केवल और केवल हिंदी ही है। और इसे कोई विदेशी भाषा या दूसरी भाषा या इस क्षेत्र की भाषा या उस क्षेत्र की भाषा को न समझें। ये हमारी अपनी मातृभाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी राजभाषा है और संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो जहां तक संभव हो सके हम अपना काम हिंदी में करें, जितना भी कर सकें, ये जरूरी नहीं है। और आपको मैं एक और इसमें बात बताता हूँ कि जिस समय आप चेक भरते हैं और अंग्रेजी में अगर आपके स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, लेकिन हिंदी में अगर आपके स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो आपका चेक डिसऑनर नहीं होता, उसे मान लिया जाता है। जैसे 14 है, आप 14 रखेंगे, उसके ऊपर 2 मात्रा लगाएं या 1 मात्रा लगाएं, कोई नहीं पूछता। लेकिन हिंदी में अक्सर गलती FOUR और FOR की अक्सर करते हैं और उस गलती की वजह से चेक डिसऑनर होते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत सरल भाषा है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही लिखिए, कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक हो सके अपने दैनिक जीवन में हिंदी को अपनाइए। और आप सभी को आज का दिन हिंदी के इस दिवस पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार और थैंक यू टू द चेयर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, Krishan ji, for those wonderful tidbits about Hindi. So let's start the discussion now. So as I said that in the last few days, there were a lot of questions regarding the use of alcohol. So I thought we'll just do some question and answers today since we didn't have, a topic in the week. Usually जो week के topic है उसी के ऊपर question answer देते हैं Tuesday पे. So let's do this alcohol session today. So why do some people react differently than others? क्यों कुछ लोगों को अलग से affect करती है, कुछ लोगों को नहीं करती? So what you have to understand is alcohol is essentially something like a chemical that you're taking in your body, and एक समय पे एक लिमिटेड अमाउंट ही अल्कोहल को बॉडी प्रोसेस कर सकती है. एंड ये कितना प्रोसेस कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द लिवर एंड इट डिपेंड्स ऑन सम एंजाइम्स दैट आर सेक्रेटेड बाय द लिवर, and depending on your liver health and other factors that affect your liver health, वो उतना एंजाइम वो उसको कर सकती है. So suppose there is a particular point, only a part of the alcohol that you consume can be degraded by the liver. उसके अलावा जितना भी बच जाता है बॉडी में, that is free to circulate in all parts of the body and affect the different organs. So the main factors are that जो लिवर हेल्थ है उस पे सबसे ज्यादा डिपेंड होता है. ऑल्सो देर इज सम डेटा दैट सेज दैट obese people they are not able to metabolize alcohol very well. So इनको ज्यादा इफेक्ट करता है अल्कोहल, especially when it comes to an emotional and mental level. So standard drink, what is one standard drink? We've been talking about this. I think we've mentioned this in a couple of sessions as well. So around 14 grams of pure alcohol is one standard drink. And अगर आप इसमें देखें, ये अलग अलग इसमें अलग अलग तरह के
अल्कोहल टाइप्स है उसकी वैल्यू बताई गई है. सो फॉर बियर इट्स 12 ounces. 1 ounce is around approximately around 30 ml. So 12 ounces of beer, 8 ounces of malt liquor, 5 ounces of wine, and 1 ounces or a shot of 1.5 ounces or a shot of 80 proof distilled spirits. So उसमें gin, rum, vodka and whiskey आते हैं. So that's 1.5 ounces, around 45 ml. So that is this is one standard drink. So men are allowed two standard drinks in a day, and females are allowed one standard drink in a day. Is wine safer than beer? So this is a common myth. I think women prefer to drink wine more because they think it is not as it's not a very hard drink according to them. So, but then the amount of alcohol in both these drinks are the same. So, one 12-ounce beer has about the same amount of alcohol as one 5-ounce glass of wine or 1.5-ounce shot of liquor. So, it is the amount of alcohol consumed that affects a person the most, not the type of the alcoholic drink. ये चीज आपको याद रखनी है कि it depends आप कितना how much you are consuming. It is also known that women metabolize alcohol slower than men, and इसके लिए उनकी जो drinking limit है वो थोड़ी ज़्यादा है men की. But yes, the amount of alcohol that is consumed has to be restricted. So moderate drinking किसको बोलते हैं? अगर आप और जब हम कहते हैं कि you ask us can we drink alcohol, we always answer that in moderation. So what is this in moderation? In moderation is one drink or less in a day for women, and 2 drinks or less in a day for men, or non-drinking at all. So this is drinking in moderation. इसके ऊपर अगर आप if you are having any alcohol, then that comes in excessive drinking. ठीक है? So that's about it. Binge drinking क्या होता है कि this is a pattern of alcohol जो for some time people don't drink, and then अचानक से वो जब drink करते हैं and they drink so much so as to bring up their blood alcohol concentration to 0.08% or more. So usually this is approximately, so these are people who don't drink usually, and अचानक से then they'll have around 5 or more drinks. So this जो ये मैंने 0.08% बताया है आपको blood alcohol concentration, this corresponds to around 5 or more drinks on a single occasion, and 4 or more drinks on a single occasion for 5 drinks for men and 4 drinks for women. And ये बहुत कम समय में, जैसे कि this happens in parties and जब आप कहीं पे socially drink करने जाते हैं तो 2 घंटे के समय में अगर आप 5 से ज्यादा for men and 4 से ज्यादा for women, if you are having alcohol, then this would count as binge drinking. And binge drinking is quite taxing on the organs of the body. So binge drinking की जो age group है आप देख सकते हैं, जो 25 to 34 की age group है यहाँ ज्यादा होती है, and 18 to 24 जिसमें मैंने आपको बोला कि college going kids are there and they have just been introduced to the concept of drinking, so they also consume alcohol in this pattern. And around so if you see the graph, around 20 to 25% of the people lie in this 18 to 34 age group. What health problems can happen with excessive drinking? Chronic diseases such as liver cirrhosis. So liver की problem आ सकती है, pancreas की problem आ सकती है. There is a condition called acute pancreatitis. This is an emergency, and जो acute pancreatitis की जो condition होती है, this can be triggered by alcohol. So alcohol is one of the main reasons whenever there is a patient with pancreatitis, acute pancreatitis coming to us, we are always have alcohol as one of the causative factors. So something like a viral illness can also cause it, but alcohol is one of the main reasons. So कुछ cancers जो हैं, इसके बारे में जब हमने cancers के बारे में बात करी थी, then also we had discussed this. Some of the cancers can be caused by alcohol. Cancers of the liver, cancers of the mouth, cancers of the throat, cancers of the voice box, and cancers of the food pipe. These can all be
due to these can all be a result of excessive alcohol drinking. इसके अलावा there are other factors and other results of this as well, like we have unintentional injuries such as motor. So drinking and driving can cause motor vehicle traffic crashes. It can also lead to violence. And if a pregnant woman drinks it, then fetal alcohol spectrum disorders जो हैं ये हो सकते हैं. If a pregnant woman drinks, then again, not a pregnant woman. So if a young mother drinks, sudden infant death syndrome जो है ये भी हो सकता है. Alcohol use disorders. I'll just talk about that in a second. Yes. So sudden infant death syndrome क्या होता है कि suddenly, so this usually happens in children who are left alone. So in India, the trend is to keep the baby with you. Most of the young mothers, they keep the young babies जो infants होते हैं उनको अपने साथ ही सुलाते हैं. But a lot of people also put them in nurseries, and nursery in the sense that एक पास वाले रूम में या फिर एक अलग रूम में उसको शुरू से ही रखते हैं. तो रात को सफोकेट होने की थोड़ी संभावना रहती है. So if you are drunk, and if you've had more than the permissible limit, then if the baby is in danger, you would not be able to realize. So this is one problem that we need to take care of when young mothers are drinking. And in India, the incidence of sudden infant death syndrome is not so much, so we don't need to worry about this. ये आप जानते ही हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको अल्कोहल वर्जित होता है. वी शुड नॉट encourage drinking. So पहले it was said that it does not affect the baby much, but yes, a lot of mental issues can happen if you are consuming alcohol when you're pregnant, so that should be avoided. And मैंने violence की बात करी, I was not able to stress on it much, but yes, a lot of people who are chronic alcohol users, they it's reported that in their houses, domestic violence is a common finding. So can alcohol cause cancer? So mouth, throat, liver, breast, colon, rectum, voice box and food pipe. इस तरह के cancers जो हैं alcohol की वजह से हो सकते हैं. It is also said that even small कुछ ऐसे cancers हैं. We'll discuss about that in the coming week. कुछ cancers ऐसे हैं जो आप एकदम low level of alcohol आप consume कर रहे हैं, then also you can be at risk. इसके अलावा the amount of alcohol that you drink is directly proportional to the risk. So आप जितना ज़्यादा alcohol consume करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कैंसर होने की रिस्क आपकी बढ़ती जाती है. So this is an important slide. Who should not drink? तो हम हमेशा कहते हैं you can drink in moderation, but who should not drink? Pregnant, or if you are trying to be pregnant, if you're planning to uh, conceive, then you should not be drinking. If you're not if you are not in the legal age for drinking, you should not be drinking. एंड इफ कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो रिएक्ट करता है, आपके डॉक्टर ने आपको अल्कोहल लेने से मना किया है, देन अगेन यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग. एंड इफ so this is also important, if you are trying to recover from alcohol use disorder, अगर आपको इसको पहले अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते थे, इसको पहले
this is alcoholism भी बोलते थे, but now the term that is used is alcohol use disorder. अगर आपको लत है and अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, then you should definitely try to avoid alcohol, because every time you drink it, you'll be back to stage 0. So this is not a question, it is just a fact that I wanted to share with you, that the people or children who are exposed to alcohol and who consume alcohol before the age of 15 for the first time, they are 6 times more likely to become alcohol dependent than adults who began drinking at age 21. So if you are a regular drinker, अगर आप moderate levels तक आप moderation में drink करते हैं घर पे, and if there are children in your house who are below the age of 15, please avoid talking about it in front of them. Please avoid having your drinks in front of them, and educate them about these things. But you should encourage that before their legal, because I know that in a lot of houses, जहाँ पे drinking is not a big deal, वहाँ पे the kids are also they are likely to taste alcohol, so you should not encourage that. जो legal drinking limit है, you should be encouraging them to take their first drink only at that age. उसके पहले उसको नहीं encourage करना चाहिए. In fact, जो 21, that's what they are saying, that जो 21 के बाद में they have their first drink, they are less likely to become alcohol dependent, and they are less likely to have a alcohol use disorder. So alcohol use disorder है क्या? जब आप अपनी जो ड्रिंकिंग है इसको लिमिट नहीं कर पाते, पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आपके होती हैं because of your alcohol drinking, and you're continuing to drink in the same amounts, then you know that you have an alcohol use disorder. जब आपको अपनी मात्रा बढ़ानी पड़े, if you are having 20 ml and after a while, instead of taking 20 ml, 30 ml आपको पीना पड़ रहा है to get the same effect, whatever desired effect is there. If you're having to drink a little more, then again you have an alcohol use disorder. That and also जो इतनी आपकी ज़्यादा strong cravings हो जाती हैं that you can't think of anything else. अगर आपको ऐसा हो रहा है, then you have an alcohol use disorder, and you need to be careful, and you need to speak to a professional to help you get out of this mess. So excessive drinking किसको कहा गया है? More than 14 drinks per week for men, more than 14 drinks per week for men, and more than 7 drinks per week for women. So अगर इससे ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं, then you are falling in the excessive drinking category. So why do alcoholics crave sugar? So alcoholics usually do not crave sugar. जो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको sugar cravings ज़्यादा होती हैं. People who are trying to limit their alcohol, they have more of sugar cravings, and the reason for that is that even sugar affects the reward system in the brain जहाँ पे alcohol act करता है. So you end up craving more sugar. So this is इसमें एक problem यहाँ आती है. This is a challenge that alcohol छूट जाती है और sugar चालू हो जाती है. You start having a lot of sugar, which is a problem because even sugar can be detrimental to your health. So ये another question that was asked to me. Can alcohol cause acne? Acne मतलब जो pimples होते हैं, इसको acne बोलते हैं. So directly alcohol का कोई connection नहीं है कि वो आपको तुरंत acne produce करेगा, but it does impact your body in a way जहाँ पे आपको skin problems थोड़ी आ सकती हैं, and it directly affects your skin by causing dehydration and inflammation. So alcohol का एक बहुत ही known and common side effect है कि वो dehydration cause करता है and inflammation cause करता है. Hormonal changes भी पैदा कर सकता है. This suppresses your immune system, and जो stress के levels हैं, ये alcohol से बढ़ते हैं, and stress की वजह से भी acne आपको हो सकता है. इसके अलावा alcohol जो in itself, alcohol has large amounts of sugar, and this causes skin damage and skin infections. So indirectly, it can cause acne. Is alcohol a blood thinner?
So again, कोई direct effect नहीं है blood thinning effect. But if you are on some blood thinners, then you need to speak to your doctor about whether or not you can continue. So जो antiplatelet drugs हैं, that can be consumed again in moderation. But some blood thinners के साथ में alcohol is not required because alcohol it enhances the effect of blood thinners. So this is something that you need to remember. Does alcohol cause weight gain? Again, directly नहीं करता, but yes, actually directly भी करता है. Alcohol in itself, it has a large amount of sugar that causes weight gain. When you have alcohol, then you are more likely to have some foods that are very high in calorie. So you lose your decision making power and you end up eating a lot of unhealthy items when you are having alcohol. So this is another cause of the weight gain. Also, it depresses your central nervous system, जो आपकी nerve health है, ये इसको ruin करता है, and it generally makes you a slower person than you would be. So I understand that the immediate effect of alcohol is to give you feel rejuvenated or whatever, but eventually alcohol causes a depression of the central nervous system, and it generally slows your movements and it slows your thinking process as well in the long run. So this has to be avoided, it has to be curtailed, and you have to, so जो permissible limit है उससे अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे तो ये सब problems आपको नहीं होंगी. So when you have those जब central nervous system depressed होता है, then you are less likely to be exercising, you're less likely to be moving about, and you're less likely to do anything else. So that would again add to your weight gain problems. So this is all we have today. There are some questions in the chat box. We'll be back with more about alcohol if we think that this is necessary. But for now, I just have these few questions that I discussed. I'll just be back in a second and we'll discuss the questions in the chat box. Just 1 second. Okay. Some theories say alcohol works as blood thinners. It enhances the effect of blood thinners. जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं. धन्यवाद चावला जी. जी. Is liquor different from wine? Well, yes. जो मैंने आपको बताया. 1 second. Let me show you the slide. I am not aware of. So this is the this is wine, and 1.5 ounces of a shot और 80 proof जिसमें 40% alcohol content होती है, distilled spirits और liquor. This is that standard drink अगर हम देखने जाएं, so this is how it is, and इसमें 5 ounces of wine is equal to 1.5 ounces of the same thing. So that is the connection. अगर आप उसमें quantity में देखना चाहें तो. Is drinking alcohol is dependent upon age? I didn't understand the question. Alcohol versus smoking, which is dangerous? Alcohol is permitted in moderation, but smoking, there is absolutely, it's not allowed. मैम क्या वैक्सीन के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? Absolutely, you can plan it right away. What is the safer limit for adults? You already discussed this. Please go back and see. Why does human brain like all bad food and drink compare to good food and drink? तो ये तो भगवत गीता के सेशन में आपको पता चलेगा. Is alcohol consumption safe for people having Gilbert syndrome? Is alcohol tolerance less for them? Yes. So people who have Gilbert syndrome, they should not. उनकी जो permissible limit है वो काफी इससे कम होगी. Rahul Sharma is saying, is safer limit is good for health? No.
So there is a lot of पहले ऐसा कहा जाता था कि red wine अगर आप consume करते हैं तो then that is good for your cardiac health and that can help you. But eventually now the consensus is that the effect that it has on your heart it does not outweigh the bad effect on the liver. So ultimately what we say is that you wouldn't say it's good for health, but we can permit it in that safer limit. Other than good hydration, what are the other things that can reduce the ill effects of alcohol? Good hydration, good amount of sleep and rest that can, so I think you're talking about a hangover. So that's what helps. And I've heard that lemon and salt helps, but I've not read any studies about it. This is a question that I'll take up in another day, so just remind me. Alcohol increases good cholesterol, HDL says data. Yes, so this is something that even I have read. It is said that, but again, I'm telling you that the general consensus among doctors is that the good effect that alcohol produces, it is not as much as the bad effect that it produces on the liver and other, body organs. So, इसको हमें दवाई समझ के we should not be consuming it. This is good for health. Does drinking wine increase sugar? Yes, it does. So drinking alcohol, अगर आप alcohol के साथ में कुछ भी नहीं खाएंगे, then also it increases your sugar. How much quantity one drink mean? ये एक सवाल बस अभी अभी आया है चंद्रभान शर्मा का. So for the last time, I'm going to show this slide of standard drink. So just type standard drink on Google images. Let me do that with you. So just type what is one standard drink. On Google, and so isme I wanted to like find a good picture that has all the kinds of alcohol. So you can just go and so if you just go to this image, it will talk to you about the spirits and I wanted to, yeah, this is talking about the spirits, and then यहाँ पे wine है, sparkling wine है, full strength beer है, light beer है, cider है. Just like this, you can find a lot of images that can help you understand what is one standard drink. Diabetic patient को alcohol ले सकता है. So it is allowed, but remember that alcohol will increase your blood sugar levels as well. So you have to strike a balance between your blood sugar levels and your alcohol levels. So I think that's all from us today. Thank you everyone for joining in. Thank you Vamsi ji and Shivani ji for bringing in the questions from Facebook and YouTube. We'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye. सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। भगवत गीता की इस कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है दूसरे अध्याय पे।